everyone, welcome to Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video we are going to talk about tax saving investment avenues. जिसमें रिटर्न की गारंटी सरकार की तरफ से नहीं है. I mean कुछ इंस्टीट्यूट दे देंगे एंड कुछ नहीं देंगे, बट अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में जानना है तो उस पर हमने वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स फोकस हियर. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अदर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C एंड उसके अलावा भी दो ऑप्शंस हैं जो स्पेशली एनपीएस के लिए हैं. अब वो क्या है आगे चल के बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट वन इज हम सबका फेवरेट, पापा मम्मी चाचा चाची सबका फेवरेट, बैंक फिक्स डिपॉजिट. उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप टैक्स बचा सकते हैं, बट उसकी भी टैक्स इम्प्लीकेशंस देख लेना. उसके बाद क्या होते हैं तभी ये डिसीजन लेना. बैंक फिक्स डिपॉजिट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी इन द बैंक अकाउंट एंड इसमें लॉक इन होता है और इसमें सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है. व्हेन आई टॉक अबाउट बैंक फिक्स डिपॉजिट इट कैन बी ऑफ 7 days, 30 days, 6 months, 1 year, 2 year. बट टैक्स सेविंग के लिए आपको 5-year बैंक एफडी में ही जाना होगा. कमिंग टू द कंट्रीब्यूशन, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव मिनिमम लिमिट ऑफ ₹5,000. कुछ का 1,000 भी हो सकता है, कुछ का 25,000 भी हो सकता है. अपने बैंक में जाके चेक कर लेना. एंड कमिंग टू द मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है. आई मीन व्हाई बैंक विल से नो टू मनी. कमिंग टू द लिक्विडिटी, आई ऑलरेडी सेड यू कैन सेव टैक्स ओनली इन 5-year बैंक एफडी. तो 5 साल के लिए वेट तो करना ही होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवॉल्विंग अराउंड 5 to 6% एंड टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन फैक्टर बहुत ही हार्श है बिकॉज इट इज गोइंग टू टैक्स एज पर योर स्लैब रेट. सो इफ यू कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट तो आपका मेजर पोर्शन, नॉट मेजर बट काफी हद तक टैक्स में ही जाता है. So if you are putting money on your bank FD, then be careful because interest is taxable each and every year. Coming to the safety part, it is secured up to ₹5 lakh. As in, if your banks get defaulted या फिर आपका बैंक डूब गए तो आपका जो टोटल मनी है that is secured up to ₹5 lakh only. इसका मतलब कि बैंक एफडी ओपन करने से पहले अपनी बैंक की स्टडी जरूर कर लेना, कहीं आपका बैंक डिफॉल्ट होने की कगार पे तो नहीं है. दी, आपको याद है हमने पिछली वीडियो में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बताया था. मुझे ऐसा क्यों लगता है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें भी 5 साल का लॉगिन है, उसमें भी 5 साल का लॉगिन है और रिटर्न उधर थोड़ा तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना. दी, बड़े स्मार्ट हो रहे हैं आप. वेल, अगर मैं अच्छे रिटर्न्स की बात करूँ देन वी हैव इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम. डोंट बी स्केयर्ड, ये म्यूचुअल फंड्स के अंडर ये एक ऑप्शन है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम. So when you invest in this category, then basically you are investing in equities, shares or stocks through mutual funds. Coming to its eligibility, it's Indian citizen and contribution minimum it can be ₹500 or it can be 1,000, depends on the particular mutual fund scheme, and maximum obviously there is no limit. Coming to liquidity, it has the shortest liquidity that is up to 3 years only. I mean आप जितने भी सेक्शन 80C की अंडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखेंगे ना, देन वहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा है, कहीं 5 साल, 7 years, 15 years और टिल रिटायरमेंट, बट ओवर हियर इट्स ओनली अप टू 3 years. Coming to the rate of interest, it is subjected to market only because mutual fund investments are subject to market risk. So it can even go to like 20% and it can even come to -20% also. Now let's come to the third option, that is insurance policies. I mean यहाँ पे आपकी ULIP, endowment, term सारी पॉलिसीज आ चुकी हैं. इसके अंडर भी अगर आप जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं देन ऑल्सो यू गेट अ टैक्सेशन बेनिफिट. कमिंग टू इट्स एलिजिबिलिटी, एनी इंडियन सिटीजन एंड डिपेंडिंग आप कौन सी पॉलिसी चूज करते हो थोड़ा बहुत एज फैक्टर में चेंजेस आ सकते हैं. Coming to the contribution, it depends on your age, which policy you have selected and many other factors. Liquidity, it also depends on the policy. Usually जो insurance policy होती है 10 years, 20 years, 30 years पीरियड तक की भी होती हैं, बट बीच में भी आप उनको लिक्विडेट करा सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन इट वेरीज फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी. यू कैन इवन गेट अ 3% रिटर्न और अ 10% रिटर्न. कमिंग टू द सेफ्टी पार्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट सेफ एंड सिक्योर. ऐसा नहीं है कि आपके पैसे लेके भाग जाएंगे. डिपेंडिंग आपने सारी इन्फॉर्मेशन राइट तो दी है ना, मेक श्योर यू स्टडी द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो. आई नो दिस इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए थोड़ा सा ऊपर गया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. नाउ लेट्स गेट सीरियस बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर रिटायरमेंट. आई नो आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे,
बट प्लीज सोचना स्टार्ट कर दीजिए because we have an amazing option for it, that is national pension system. And if you are going to invest in this scheme, then definitely you are going to save a huge amount of tax. I'll tell you how. NPS is a scheme basically initiated by government only, but I have not included in the previous part because under this आपको जो returns बोले जाते हैं वो फिक्स रिटर्न्स नहीं बोले जाती. फॉर एग्जाम्पल इन PPF इट इज सेड दैट यू विल गेट लेट्स से 8% रिटर्न फॉर दिस क्वार्टर, देन यू विल गेट इट. But under NPS, there is no declaration from the government, but the money is secured. So let's talk about its basic parameters. Eligibility: any Indian citizen above 18 years and less than 60 years. I mean, you have to cross 18, then only you can invest. Contribution: minimum is 1,000 and maximum there is no limit. Coming to the liquidity part, till retirement it is locked in, so you can withdraw only at the age of 60. और रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट थोड़ी पहले भी आ जाती तब भी आप विड्रॉ कर सकते हैं. Rate of interest, again it depends which option you have selected, because let's say if you have selected an NPS where equity allocation is more but the allocation towards debt is very less, then obviously you will get a higher return. But you have selected a portion where allocation towards debt is higher and the allocation towards equity is less, then obviously your return will also get affected. और NPS की एक और खास बात है, you can get a NPS deduction in 2 more sections also. क्या सच्ची मुच्ची? हाँ, सच्ची मुच्ची. Other two are Section 80 CCD 1B and Section 80 CCD 2. Section 80 CCD 1B के अंडर you get an additional deduction of ₹50,000. यानी कि आपने 1,50,000 तक का जो Section 80C का कोटा है, you have finished that. Apart from it, you can get an additional deduction of ₹50,000. That is in total 2 lakh deduction. And NPS के अंडर आप अकेले नहीं हैं, एम्प्लॉयर भी आते हैं आपका साथ देने के लिए. So under Section 80 CCD 2, over there employer can contribute up to the 10% of your basic salary plus year-end allowance. So 1,50,000 plus 50,000 and this extra 10% also you can avail as a deduction under NPS. Isn't it super amazing? But the problem is my money is locked till my retirement. So if you are comfortable with such a long lock-in period, then you can go for this option. Otherwise, you can miss it. और अगर आप सेक्शन 80C को और डिटेल में जानेंगे तो you will get lot of investment options too. But over here I prefer to talk about popular and common investment options only, because जो भी extra investment options है वो शायद से हमारे काम आए या नहीं भी आए. But whatever I talked about, it is most popular and most common, जो कि बहुत सारे individuals यूज करते हैं. वाओ, सेक्शन 80C में इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो मैं तो सब में इन्वेस्ट करूंगा और 6 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ. सब में 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, मजे ही मजे. नो, यू कांट डू लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव इन्वेस्टेड ₹1 lakh 1 lakh 1 lakh in 3 of the section 80C investment options, then you will not get deduction up to ₹3 lakh. You will only get deduction up to ₹1,50,000. It doesn't matter if you select 1 scheme, 2 scheme, 3 scheme or whatever. The combined total is only 1,50,000. क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा. So yeah, that's all for today. And if you enjoy this video, then please share your feedback in the comment box and don't forget to like, share and subscribe the channel. Until then, goodbye.